शावर। चलें जब हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमने कर लिए थे काफ़ी सारे लेक्चर जितने भी अपलोड हो गए थे। आज मंडे है तो आज जो है ना और भी लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। आगे लेक्चर जो अपलोड हुए उनमें ये इंग्लिश का लेक्चर है 3rd, ठीक है, और उसके अलावा ये 6th लेक्चर है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। अभी हम करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। ओके, क्विज स्टार्ट क्विज कर लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डैशबोर्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर सेव तो ये हो गया करेक्ट। अब कर चल लेते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। Now we'll talk about the largest organelle in eukaryotic cell, the nucleus. In previous module, I introduced nucleus as the governor house of the cell. Nucleus dictates the function of a cell. Function of a cell is dependent upon the proteins it has. The proteins, the recipes of all the proteins are contained in the nucleus in the form of genetic code, which is made up of DNA. Nucleus has certain features. Nucleus is double membrane structure. It has two membranes. Nucleus has pores through which molecules can go in and molecules can come out of the nucleus. For example, the RNA we saw in the animation comes out of the nucleus through those little holes. These nuclear pores also have to allow different material to go inside the nucleus. For example, ribosomes, when they're assembled inside the nucleus. The protein has to move into the nucleus where it is assembled into the ribosome, and then that ribosome is expelled out of the nucleus. The place where ribosomes are assembled is called the nucleolus. Here you can see these little pores in the nucleus. The other important feature of the nuclear membrane is that nuclear membrane is also continuous with the membranes of the cell, which we'll talk about later. Those are the endoplasmic reticulum. Nuclear membrane is continued with these membranes. Inside the nucleus there is a structural element, a type of skeletal element, which is called nuclear lamina, that is holding, basically maintaining a specific shape of the nucleus. Nuclear lamina is very important. It not only maintains the shape of the nucleus, it also protects the DNA contained in the nucleus from damage. For example, there is a disease called progeria. In this disease there is a mutation in the gene that codes for this nuclear lamina. If nuclear lamina is not present, the DNA gets damaged very easily, and people suffering from this disease, they age much more rapidly than normal people. Now let's look at other features of nucleus. Nuclear pore has an octagonal symmetry, which means that nuclear pore is made up of 8 proteins, and these are similar proteins. They make, basically they are arranged in a way that they are making the periphery of the hole which is present in the nucleus. This hole is, or the nuclear pore, the proteins that are making this nuclear pore have to be very selective, that what molecules they allow in and what molecules they allow to leave. Small molecules can pass through these nuclear pores very easily or leave the nuclear space very easily. However, larger molecules are regulated. Here we have on the screen you can see the structure of nuclear pores. The nuclear pores, as I mentioned, have octagonal symmetry, electron micrograph of a nuclear pore. Here you can see the nuclear lamina. This is also an electron micrograph of the nucleus. Now
we will come to the what is the major content of the nucleus. It is the nucleic acid. As we know, nucleic acid or the DNA is arranged in chromosomes inside a eukaryotic nucleus. During cell division, this chromatin, this DNA is condensed and it forms discrete structures called chromosomes. We will talk about chromosomes in a later lecture, but these chromosomes are basically made up of DNA and protein, special type of protein molecules called histones. They contain this DNA. The DNA is wrapped tightly around the histone molecules. We will talk about this in a subsequent module. सो हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है, तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। एज यूजुअल हमें बेहतरीन समझ आता है, वीडियो में कुछ पॉइंट्स समझ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, और बाकी के पॉइंट्स जो है रीडिंग से समझ आ जाते हैं। रीडिंग में चलते हैं। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए, द डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड फर्स्ट स्टेप इन डिकोडिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। सही हो गया, स्मॉल क्लास में हमने ये पढ़ा है। The single nucleus is usually the largest organelle in the cell. The nucleus of most animal cells is approximately 5 micrometers in diameter, substantially larger than most entire prokaryotic cells. The nucleus has several roles in the cell. The nucleus is the site of DNA duplication. The nucleus is the site of genetic control of the cell's activities. A region within the nucleus, the nucleolus, begins the assembly of ribosomes from specific proteins and RNA. The nucleus is surrounded by two membranes, which together form the nuclear envelope. The two membranes of the nuclear envelope are separated by 10 to 20 nanometers and are perforated by nuclear pores, approximately 9 nanometers in diameter, which connect the interior of the nucleus with the cytoplasm. At these pores, the outer membrane of the nuclear envelope is continuous with the inner membrane. Each pore is surrounded by a pore complex made up of 8 large protein granules arranged in an octagon where the inner and outer membrane merge. RNA and proteins pass through these pores to enter or leave the nucleus. Okay, so an octagon, this is an octagon protein complexes surrounds each nuclear pore. Protein fibers on the nuclear site form a cage like structure. Okay, सो ये इंसाइड ऑफ सेल है, ये प्रोटीन फाइबर्स हैं, ठीक है, ये ऑक्टागन प्रोटीन है। डन, चलें जी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीपीटीज। देखते हैं वो पीपीटी न्यूक्लियस से रिलेटेड है या फिर नहीं। हाँ जी, न्यूक्लियस से रिलेटेड टॉपिक पे लग रहा है, अब इसका बोनस पॉइंट सही हो जाए। चलें जी, इसको ओपन कर लेते हैं। प्लीज़, आप लोगों को पता है हमारा बोनस पॉइंट होता है, और उससे हमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन तौर पर सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। इस ड्यू टू कलर्स, इस ड्यू टू यस पॉइंट्स, जो पॉइंट्स में लिखे होते हैं सर टॉपिक, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जो कभी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और मैं जो है अपनी स्टडी आप लोगों के साथ कर रही हूँ, तो आप लोग को भी कुछ ना कुछ समझ आ ही रहा होगा, आई एम श्योर। क्लियर? अच्छा, क्रोमाटिन में यूक्रोमाटिन, हेटेरोक्रोमाटिन में क्रोमोसोम होता है। ओके, तो पीपीटीज में इतने सो लेते हैं क्रॉस, आ जाते हैं अपने पोस्टर सिस्टम पर। और अब यहाँ पर आ गए स्टार्ट में। A dash cell is greatly powerful in having more transporting materials.
a smaller cell. Nucleoli are rich in DNA, RNA, protein, DNA. अच्छा, nucleoli rich in DNA नहीं है, RNA, DNA, protein नहीं होगा. Lysosomes are unfolded cell membrane present both in prokaryotic and eukaryotic organisms. हाँ, mesosomes. यह सेल मेम्ब्रेन की इमेजिनेशन होती है, हेल्प इन सेलुलर फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस. तो ये हो सकता है. Diameter of a nucleus is usually dash micrometers, 5 micrometers. Okay, मेरा एक और क्लिक हो गया. नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको वो कर लेंगे, याद कर लेंगे. अटैच सेल इज ग्रेटर पावरफुल एंड हैविंग मोर प्रोटीन मटेरियल, स्मॉलर सेल. Diameter of nucleus is 5 micrometer. Okay, इसको करते हैं क्रॉस. अब जनाब ये हमारा टॉपिक डन हो गया और हमारा nucleus का टॉपिक डन हो गया. हम यहाँ पर करेंगे डन. यस, थैंक्स लॉट. चल, अब हम लोग इसको करते हैं क्रॉस. ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. तो यही एक टॉपिक आया हुआ था और यही मैंने पढ़ लिया है. अब इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह. तब तक हम लोग बात करते हैं.